Good evening, dear parents. I Sakash Tangri from D.A.V. Pakhowal School. We are starting meeting very shortly, so please be with us. Thank you all. Good evening, gentlemen. I think we can start, man. We have 200 plus parents. Thank you, Kaushik. A very good evening to all present. I welcome all the parents of Class 5 in this virtual meeting, which has been planned under the guidance of our respected principal, Dr. Satwant Kaur Bhullar. I would like to request our principal ma'am to address to the gathering and share her pearls of wisdom. Thank you, Over ma'am. to you, ma'am. Thank you. A very good evening to all present. My very, very respectable young parents of my children, my very dear kids, my fellow colleagues, Madam Tajinder Kaur, academic supervisor. I believe that all of you all in a very, very good health and should be also because now we are this is immune to such situation, and this is we are conditioned to live with these circumstances also, because there is this is what we can do, that this is we should do it, this is the best we can do, situations are not in our hand. But yes, that attitude, it is a strong willpower, it is our strength, that it is that we can face any of the situation, and we should be ready for that also. So, with this, my belief and my prayers to God to keep my GAV family, my extended family, always healthy, happy, and peaceful. Dear parents, it is the meeting, and already Ma'am Tajinder is this is always in touch with you, and I was addressing the other this is classes, the senior classes also. Though this is not so much, this is to share from my side. As in the said the pulse of wisdom, no, no, not at all. I would not be giving any that such. This is the do's and don'ts. It is only as a family that the affair, our relationship, that I also got that greed. Kitajinder, if you allow me, I can also talk to parents, because it is like giving an emotional satisfaction, talking to the parents, you of my children after a long, long gap. That I think that you also would believe it is not only that the blood relations which matter. It is the other that are worldly relationships. It is we also have such a beautiful relationship. We share that because we what are at the what ends we are the parents. You parents at home, and we parents at school. So what we share together, it's very precious, our children. So talking about our children, this is it gives me happiness because these my children are small, still impressionable mind. Still, this is giving me less troubles. That when I was talking to Ma'am Rajendra, that Ma'am, this is any of the. She said, "नहीं नहीं ma'am, it is fine." मैंने कहा about the classes लगाते हैं नहीं मैम, वो तो ऐसा कोई problem नहीं है. I'm happy.
ये मेरे छोटे बच्चे जो प्रॉब्लम्स नहीं देते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चे अभी अभी छोटे हैं, इनोसेंट हैं, इग्नोरेंट हैं, बट obedient हैं। बड़े होते जाते हैं तो जो it is there is a pollution, not only it is the environmental pollution, there is some social pollution also, which is disturbing the society. But this is still, they are, if they are smaller, and they are, this is still under your that direct supervision also. It is all because I would keep credit to you, dear parents, because you have been giving them more time. And that's why, but the efforts we at school have been making are giving us is the better results. So today I would not be, this is giving me, giving you, this is the instruction, do that. No, not at all. It is only that you, it is about, this is the, some of the, I would say, uh, life skills, it is lessons from life. And out of that, the one it is, I always keep on emphasizing, and मुझे नहीं पता मेरे colleagues मेरे से, मुझे लगता होता, मुझे कहते नहीं है, वैसे होता ना, बड़े को हम कई बार कह नहीं सकते, but it is in our heart, pinch देता है। वो बाकी सारी ज्ञान की बातें करेंगे तो मैं कुछ और करती रहती हूँ। मैं उनको कहती हूँ, अरे भाई बच्चों को स्ट्रांग बनाओ ना, लेट्स वी मेक द इम्यूनिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन वेरी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज इफ द लाइफ इज देयर then everything they would enjoy. You know? If it is, this is, they have a good health, so then nothing is impossible for them. And that health, it is not only, my dear, this is young parent, it is not only that the physical health, it is that that is the man, along with that the physical health, it is mental health, it is the emotional health, it is the intellectual health also, no doubt. And it is the spiritual health also, which gives us that the strength during the tough timings. And there is a book also, when the going is tough, so then this is, we have to become tougher. हालात कभी अच्छे नहीं होते हैं. It is not this is the straight line. Straight line जिंदगी थोड़ा होती है, वो तो मौत होती है. It is not good. Zigzags always are there in life. Obstacles होंगे, राहें मुश्किल होंगी, and मजा किसमें है, that how we all those, that the zigzag, the obstacles are stepping stones, and then we accomplish that the goals that give you satisfaction. क्योंकि मैंने कहा जिंदगी में ये सारा कुछ साथ साथ चलता है. हमें लगता है हालात ऐसे मुश्किल आ गए, ये आने ही थे, इट वाज दिस इज, और जो वायरस है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है. तो व्हाट इट इज है, हाथ पे हाथ रखे तो बैठ नहीं सकते, हथियार छोड़ भी नहीं सकते. नेवर, वी शुड नेवर क्विट. ओके, मैंने ना खुद क्विट करना कभी सीखा है, ना हार माननी सीखी है, ना अपनी टीम को सिखाई है, ना मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया है, और ना ये सीखने दूंगी. स्ट्रगल, हमेशा कोशिश, लास्ट तक कोशिश, और वो जीतते हैं जो कभी क्विट नहीं करते. दोज आर विनर्स हु नेवर क्विट. दैट आई विश टू टीच माय चिल्ड्रन. एंड व्हेन दे वुड लर्न दिस थिंग, दिस लेसन इन देयर लाइफ, तो फिर नथिंग इट इज डिफिकल्ट फॉर देम, नथिंग इट इज डिफिकल्ट. वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब डिफरेंट मोड्स होंगे, डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, मगर उसमें एटीट्यूड एक जैसा, एटीट्यूड एक जैसा. और वो एटीट्यूड क्या है कि कोई मुश्किल आ जाए, द फर्स्ट बिलीव, उसका हल वहां पे है. देयर इज नॉट एनी ऑफ द लॉक व्हिच डजंट हैज अ की. देयर इज नॉट एनी problem in life, the solution is there, because you also, this is that when we read the newspaper, it is, we watch that this is the news. कभी कुछ सेलिब्रिटीज हैं, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहे हैं, लाइफ से स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस है. व्हाट स्ट्रेस इट इज देयर, क्या स्ट्रेस आ गया? अरे भाई, व्हाट वी कैन डू वी शुड डू, व्हाट वी कैन नॉट डू, जो हमसे नहीं हुआ छोड़ दो उसको, होने दो उसको. फिर क्या है, लेट्स वी फेस इट, बिकॉज वी विल लर्न अ लेसन फ्रॉम देयर. कभी भी कोई मुश्किल वो ऐसे नहीं जाती, जहां तो हम उसको अपने रास्ते पे ले आती हैं, हम उसको, उस मुश्किल को हम अपने पाँव का जो है, वो पाँव के नीचे, जूती के नीचे का पत्थर बना लेते हैं, और या फिर
वो हमें कोई ना कोई लेसन देके जाती है which is very important for our life. So let's, it is my advice to you all, क्योंकि सब मेरे से छोटे हो, जो आज हो, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अपने बच्चों को जरूर कुछ समय के लिए फिजिकल एक्टिविटी में डालें। बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। आई नो इट कि अभी घर छोटे हो गए, पार्क रहे नहीं, खेलने की जगह नहीं रही, आपकी ये शिकायत रही मैम स्कूल में तो आप खिलाते नहीं हैं। स्कूल में जो होते हैं एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, मैंने मान लिया, गर्मी भी आनी है, सर्दी भी आनी है। गर्मी में लेकर जाओ तो गर्मी लग गई, सर्दी में लेकर जाओ इतनी सर्दी थी, आप बच्चों को कहाँ ले गए? तो फिर कौन सा मौसम रह गया? हम बच्चों को टफ बनाए, गर्मी को सहना सिखाएं, सर्दी को सहना सिखाएं। गर्मी हमें गर्मी ना लगे, सर्दी हमें सर्दी ना लगे। कितने मजबूत हो हमारे बच्चे, और वो कैसे हो सकते हैं जब हम उनको उनका एक रूटीन सेट करें। एटलीस्ट 1 आवर बहुत अच्छे से खुल के खेले हमारे बच्चे, घर में खेले। नॉट ओनली इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे शुड प्ले सम गेम, अरे भैया उसको रस्सी कूदे, वो छलांगे लगाए, वो उनको योगा करना सिखाओ, है ना। सम दिस इज द गाइडेड दैट द एक्टिविटी आल्सो शुड बी देयर। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, वॉक घर में करना सिखा दें। आजकल होम जिमिंग है, घर में कितने ही लोग हैं जो घर में जिमिंग करते हैं, और एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज आई ऑल्सो हैव दिस हैबिट। सो लेट्स, ये तो फिजिकल एक्टिविटी। अब आगे मेंटल। बच्चों को हम ये कहें कभी घबराना नहीं है जिंदगी में, उसको समझना है धैर्य के साथ, है ना। अगर घबरा जाएंगे तो फिर वो हमें डराएगी, अगर हम घबराएंगे नहीं तो हमें कुछ नहीं कहेगी, वो हमसे घबरा जाएगी। उसको समझो और फिर उसका हल निकालो, ये सोच के कि इसका हल है। क्योंकि कई इट हैपन्स, रियली पेरेंट्स, dear parents, it happens because there would be the time when your protected hands would not be there, when our guidance would not be there. They may be alone in certain situations of your life, and that it is when they may not be in the school, they may be going, this is their for their higher study, they are in hostel, they are where this is where the institution, especially in the colleges, they do not bother, उनको नहीं होता है जहाँ स्कूल की तरह उंगली पकड़ के चलना। तो उस सिचुएशंस में वो बच्चे घबराए नहीं, मगर वो कब होगा जब हम उनको right from the beginning we would teach them how to be strong, how to face any of the challenge. This is, उनको एक बॉक्सर की तरह बनना सिखाएं। बॉक्सर को देखा है ना आपने, कई बार पीछे हटता है, किसके लिए? एक बड़ा पंच देने के लिए, है ना। कभी पीछे हटते हैं और क्या, और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने के लिए। कभी छोटी छोटी लड़ाइयों को छोड़ देते हैं, उनको लड़ते नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ को बचाए रखने के लिए बड़ी लड़ाइयों के। ये लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि बच्चे हैं, कभी रिलेशनशिप से उनका दिल टूट जाता है, कभी कभी किसी ने कुछ कह दिया तो बड़े हम हर्ट हो गए। हम तो अभी तक नहीं होते, हमें तो अभी तक बड़े डांट देती हैं, हमें तो अभी तक छोटे भी कई बार कुछ कह जाते हैं, छोटों पे हम हंस देते हैं, बड़े की बात सुन के हम थोड़ा सिर झुका के इधर उधर से खिसक जाते हैं। फिर क्या हुआ? Then what happened? That was momentary. 99% जो कभी कुछ कहता है उसका वो मीनिंग नहीं होता। Don't take such things to heart. बहुत प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएंगे। When we teach them tolerance, patience, they would learn a lesson. हर बात का जवाब देना कोई जरूरी नहीं होता, and it is not good. It's not good. Let's we teach this to our children. This is that the mental strength, it is the emotional strength. Intellectual, yes. And for intellectual, my advice it is, don't worry about at the school. Now, this is what a bit still I know that the queries ma'am Tajinder she shared, मैम अभी भी फिफ्थ में भी सिलेबस की बात हो रही है, मैम ये हो रहा है। अरे मैंने कहा भाई ये अभी पांचवी में ये कौन से सिलेबस का बात हो गया? And then my dear, this is at the new education policy. It is not that it is at that score, it is important, it is the applications. It is the learning outcome which is more important. It is how you apply that knowledge, it is in life. That is more important.
डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि इस चक्कर में जो बच्चा क्रैम करने लगता है ना, तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग भूल जाता है। बच्चा उसको थॉरली रीड करे, बच्चा उसको अच्छे से पढ़े, बच्चा उसको अच्छे से समझे। Especially this is in primary classes. These classes, what we should emphasize, it is more than the reading. It is thorough understanding. That is more important. Understanding. उसको समझ ले। Learning, it is at the outcome. It is more important. तो वो मत देखो, हाँ वो हर चीज को जरा जितना सिलेबस दिया जाता है तो उसको जरा गो थ्रू जरूर हो, तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। माई ग्रैंड डॉटर, she's in class 3, and my son, he shifted to America. तो मैं उससे पूछ रही थी, बेटा क्या डिफरेंस, पार्टी they were in Bangalore, तो उसको मैंने पूछा क्या डिफरेंस वहाँ पे। My daughters all said that mom, वो बहुत emphasize करती हैं रीडिंग को, बहुत reading, and so much of the reading, so many of the books, and many, it is the vocabulary which is more important. And my dear, it is true also. Vocabulary, it is required, it is for the science, it is for the social sciences. And when they have that the vocabulary, they develop that the understanding also. That is very important. You know? It is in mathematics also. It is that is I always call this the mathematics. It is at the backbone, because the child, this is must have that understanding. It is for mathematics up to class 10 at least. ये हर जगह काम आती है, हर बच्चा कुछ कहीं भी जाए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एक लैंग्वेज बेहद इंपॉर्टेंट है। सो सिलेबस की बहुत ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगी। मैम इज, मैंने कहा एक दिल से आवाज निकली थी, मन किया आपसे बात करने को, एंड देन इट इज that this is, we have to shape their personality, we have to make them confident, we have to make them good speaker. I wish that they should have that the good expression, the writing expression, speaking expression, the good communication skills. Very very important in life, very important. मैं कहती हूँ आजकल ये चल रहा है ना, हाँ इलेक्शन का सीजन चल रहा है, आप देख लीजिए जो अच्छे स्पीकर्स हैं, दे ओवरकम अदर्स। वो डिलीवर कितना करते हैं वो छोड़ो, वो हम सबको मालूम है, मगर अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी जरूर आती हो। इफ यू आर इंटेलिजेंट, then this is your that outcome that become double. तो अच्छे स्पीकर होना, एक्सप्रेशन होना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना, राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा होना बेहद जरूरी है। और इसके लिए क्या है, बहुत सारी चीजें। इसके लिए क्या है कि बच्चे एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, उनका स्टेज फियर नहीं होना चाहिए। दे शुड बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड हाउ दैट वुड कम when they would be participating in the different activities. I keep on telling ma'am also कि मैडम आप इनको जितना हो सके स्टेज पे ला, डोंट वरी अबाउट वो कितनी परफेक्शन के साथ करते हैं। देन व्हाट, हमारे बच्चे हैं, हमारा बच्चा आके स्टेज पे कुछ भी बोल देगा, हम पेरेंट, हमें अच्छा लगेगा। हर पेरेंट को अपना बच्चा अच्छा लगता है, तो जब मेरा तो हर बच्चा, मुझे तो अपना हर बच्चा बड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी बोल दे। तो इसी तरह से जो आएंगे पेरेंट्स आएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। Don't worry about perfection. Don't worry about accuracy. Worry about that. It is that they let them come on stage, because accuracy automatically will trend. So that I wish that let them come. It would become possible when they are participating in a different Olympiad, because these the different small, this is a competition, provide them the platform. It is for their preparing them for the life bigger platform. Let's we do that. हम उनको हर जगह जहां हमें मौका मिलता है हम उन्हें पार्टिसिपेट कराएं। एंड पेरेंट्स डू नॉट वरी अबाउट दैट मार्क्स कितने आते हैं, बेहद जरूरी है आप पेरेंट के लिए और हम पेरेंट के लिए ये समझना on this point of time that where our children stand, we should know the reality, and let's we face the reality. To leave it to me, trust me. If this is, you would be
that coordinating with us, cooperating as earlier. Together, we have that power. This is to fill the gap of these 2 years. I have so many plans. This is so many stretches. We will do that. We can do it. We can make it happen. मगर हमें उसका डायग्नोसिस तो करने दो ना. हमारे बच्चों की मैथमेटिकल स्किल्स कहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चों की राइटिंग स्किल्स कहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी वोकैबुलरी कहाँ. जब तक ये नहीं होगा, हमारे हाथ में एक एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. आप भी टीवी के ऊपर वॉच करते होंगे डिफरेंट जो हैं, इंडिया गॉट टैलेंट, हुनरबाज, मुदलम पदलम, बहुत सारे उसके ऊपर आ रहा होता है. आपने कभी ये नोट किया है कि मैक्सिमम ऑफ दोज जो विनर्स होते हैं वो कौन है? दिस इज जो इकोनॉमिकली मैं उनको कहूंगी कि लोअर मिडिल क्लास है. क्यों? क्योंकि उनमें एक पैशन होता है, मुझे कुछ करके दिखाना है ना. रिसोर्सेस की कभी कमी नहीं होती, नेवर. रिसोर्सेस हमें कभी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं देते. वो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, बूंद बूंद से तालाब हम भर सकते हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. हमें चाहिए क्या? ओनली द पैशन, जुनून. मैं अक्सर एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं उसको जीती हूँ. वो कहते अकल से राह जो पूछी तो पकारा ये जुनून. अकल से अकल, इंटेलिजेंट, ये सब कुछ नहीं होती. अकल से राह जो पूछी तो पकारा ये जुनून. पैशन ने क्या जवाब दिया? ये तो बस्तियां बर्बाद करती हैं. एंड यू ऑल्सो हैव सीन, वो जो होते हैं ना टेररिस्ट, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वही वो सब ऐसा कर पाते हैं जो किसी ने सोचा होता. ये तो बस्तियां बर्बाद करती हैं, ये तो जुनून है जो बसा देता है वीराने. एंड इट इज ट्रू. वन शुड हैव द जुनून, द पैशन. मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. अपनी मंजिल सोच लो, रास्ते हम बना लेंगे. रास्ते बनाने मुश्किल नहीं है. फिर से गाना भी याद आ गया, अगर साथ देने का वादा करो तो मैं वो सारे रास्ते बना लूंगी. मुझे आते हैं बनाने. मैं बहुत सारा समय ले रही हूँ. ऑनलाइन एग्जाम की मैम ने क्वेरी भेजी है. आई वुड बी आंसरिंग दिस द क्वेरीज. दिस इज इफ यू वुड बी सेंडिंग एनी ऑफ योर डाउट्स, दिस इफ यू वुड सेंड दिस टू द टीचर, योर ग्रुप्स, दिस आई वुड आंसर बैक इन द एंड आल्सो. ऑल एग्जाम विल बी ऑन, शुड बी ऑनलाइन. क्यों घबराती हूँ? मैंने आपको अभी इसका हल दे दिया. किस लिए? रियलिटी को फेस करते हैं. डोंट वरी, डू नॉट वरी. कभी नहीं ऐसी चीजों को घबराते. ऑनलाइन क्यों चाहते हैं आप? आसान हो जाए पेपर. बच्चों की सेफ्टी के लिए घबराते हो. तो क्या हम डर के अंदर बैठे रहेंगे? हमें बच्चों को इस हालात में कैसे रहना है. WHO कह रहा है वायरस कहीं नहीं जाने वाला, हमें इस वायरस के साथ रहना सीखना है. तो क्यों घबरा रही हूँ? बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है. बच्चों को हमें सिखाना है कि अपने आप को सेफ कैसे रखना है. लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल. आई एम कैंसर पेशेंट की सर्वाइवर हूँ. मैं गलत बोल गई. आई एम सर्वाइवर रहूंगी. कुछ नहीं. आई यूज्ड टू गो दिस एंड स्टिल टुडे आल्सो आई वाज इन हॉस्पिटल. अगेन दिस इज फॉर सम माय, दिस इज माय पेट स्कैन होती है. उससे पहले मुझे फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है. जब पीक होती तब भी जाना पड़ता. माय ट्रीटमेंट वाज गोइंग ऑन, माय इम्यूनिटी वाज. मैं कभी नहीं घबरा. नेवर. व्हेन दैट प्रॉब्लम केम, नेवर आई सेड देन व्हाट इट इज. But I can do it. It is a treatment. I would be getting it done. But it is there. It will not be there. I always have given. This is the positive vibration to myself. All is well. All is well. It will be in my favor. Nothing wrong will happen to me. Nobody. We should pray to God. What we can do, we should do. And no problem. तो क्या मैं हॉस्पिटल जाना छोड़ देती? क्या मैं अपना ट्रीटमेंट कराना छोड़ देती? I did not quit. इनका कुछ नहीं होता. मुझे जो कर सकती मैं करूंगी. कुछ नहीं होगा. एंड द सेम हैपन. सो माय डियर, डू नॉट वरी. हमें जब तक तो देखो देयर वुड बी इंस्ट्रक्शन. दिस हम लोग लेंगे. हम लोगों ने देयर आर मेनी ऑफ द प्लान्स.
अगर हमारा बीच में रैंडमली मैंने मैम से कहा कि मैम, if this government would allow, then you call you the student randomly it is for the offline exam also. We may have this is 1 or 2 exam, this is offline also. It's only my dear parent just to know कि हम मेरे बच्चे कहाँ खड़े। क्या आपको बच्चे बहुत प्यारे हैं? आप भूल रहे हो, मुझे आपसे ज्यादा प्यारे हैं। हम सब बहुत प्यार करते हैं बच्चों से। हमारी आप को शायद उतना नहीं, मेरी जान निकल जाती, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। सब मुझे कहते हैं आई एम नोन फॉर दिस, मगर अब जब मेरे बच्चे को जरा सा कुछ होता है तो मेरे आंसू सबसे पहले निकलते हैं। डू नॉट वरी, आई वुडंट बी डूइंग एनीथिंग व्हिच इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन, बट डू नॉट वरी, ऐसी चीजें ना सोचा करो, घबराओ नहीं। हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि एक बार इसके बाद और भी आने हैं, तो क्या मेरे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे? नहीं करना, बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनको हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है। और बाकी की स्ट्रेटजी फिर बात करेंगे, मगर डू एंड डोंट्स का ध्यान रखा करो। स्क्रीन टाइम हमारे लिए भी उतना ही होता है, मगर उसके लिए भी हमने भी अगर क्लासेस लगाई तो वी हैव गिवन अ गैप आल्सो। दिस इज देयर आर देयर वर द कुछ स्कॉलरशिप पीरियड्स आल्सो। तो हमने कहा फिर जो जो लगाना चाहे लगा ले, जो नहीं लगाने, देयर वाज मेनी ऑफ द पेरेंट्स हु विश दैट, तो वो क्यों ना लगाएं? It should be given to the, and that is more important. But what we can do, it is, this is the, अब देखो ना, today was my scare, तो उन्होंने जो मुझे whatsoever medicine was given, it was वो radiation होती है, बहुत कौन जाना चाहता है? But it was needed for my body. But मैं क्या कर सकती? What I can do, I should have lots of the fluid. This is the नारियल पानी, it is the नींबू पानी, it is that so the precaution. मैं करूँगी। ऐसा क्या, कुछ नहीं होता, ठीक कर लेंगे। योगा करो, बच्चों को एक्सरसाइज कराओ, बच्चों को हमने इसके लिए तैयार करना है। हमने ये थोड़ा है कि आ गया है तो हमने हथियार छोड़ दे। हथियार छोड़ने मेरे बच्चों को प्लीज कभी ना सिखाना। हमें ऐसे हालातों से उनको लड़ना सिखाना, राइट? मगर ठीक जगह पे लड़ना, गलत जगह नहीं। कुछ जगह पे हंस के लड़ाई को टालना भी सिखाना है। बाकी की बातें फिर करूंगी, मैंने बहुत सारा समय ले लिया मैम, तो जिनको बहुत कुछ आपके साथ जो आप चाहते हैं, मगर these are the lessons which are very important for our life, dear parents. Again, this is I have got this is I got this idea. Okay, let's we have our meeting. This is through the this link, and would be continued also because it is convenient for you also. It is convenient for us also. In the evenings, I mean, for others, want to give you never based the school that teaching time, that quality time, and would be continued with the new strategies. What further we can do? Lots many plans are there. Again, this is would talk to you, and by the end, if there are any of the queries sent to the teachers and the groups, I would answer that. Thank you, Tajil ma'am, so much, my dear. आपने इतने पेशेंस से मुझे इतना समय पेरेंट्स से बात करने को दे दिया. Thank you so much. Thank you, dear parents. God bless you all. Stay safe, stay happy. Thanks, my dear team. I would be failing my duty if I wouldn't appreciate my very, very dear, talented, committed, my team of my colleagues. I'm proud of you, my dear, because I know that what the efforts you all have been making, because I have seen you, I have given you many, many tough at the jobs also, and you have always said yes to me. मेरे प्यारे अच्छे बच्चे, thank you so much. Thank you. Over to Tajinder. Thank you so much, ma'am. Thank you. Ma'am, you didn't take extra time. It was what the quality time which was required. Thank you. And I think the parents will be very, very happy. We ourselves, we teachers here are really motivated when you speak. Thank you so much, ma'am. Thank you, my dear. Thank you, please. Now you can. Thank you. Dear parents, there are two, three things only which I would like to add upon because our respected ma'am has covered, in fact, every point which I wanted to reach out to you for. The few points which I would like to tell you, we are going to start with the exams day after tomorrow. That is the first exam, that is GK paper, which will be their online mode itself. Tomorrow we'll have 1 hour extra class for the first paper which will be conducted, for which the Viva will be started from 14th of Feb.
We are going to start with the Viva, and the Viva date sheet and planning has already been shared with you. That every day 15 roll numbers will be tested. The exact timing for each roll number will be shared by the subject teachers by tomorrow. So please, all of you, see to it that students do not miss out GK paper or any of the Viva papers. In case any of the parents have any issue with the timings of Viva, you are requested to approach the class in charge or the subject teacher with your excuse or your reason for change in timings. I will be discussing with the teachers, and if possible, we will be adjusting the timings as per your requirement only in case of the genuine cases. The other thing which I would like to add upon that we are getting over with the exams at an early timing so that we can start with our session well in time. We are going to start with the session this year again in the month of March. We'll be starting from 21st March. If the government allows and we are comfortable enough to call the students to school, we'll have offline classes. In case there is some problem, there is issue, then we will be again beginning the session with the online classes and switch over to offline as and when the, the scenario is comfortable. The other thing which I would like to share with you parents is that we have already ordered for the ID cards and authority cards of your wards. The ID card and authority card which were to be provided this year and could not be provided due to the sudden shutdown of the schools will be provided in the new session. For that, we need your cooperation. Kindly bring the family photograph when you come for the final PTM of your ward and hand over to the class in charges so that the ID cards and the authority cards can be made well in time and can be given to your children well in time, that is, in the beginning of the session itself. With this, I would like to request the teachers, in case there is any query from any of the parents, please let us know so that I can answer, or our respected ma'am is also there. She can answer. If there is no query, then we'll wind up with today's meeting. Dear teachers, kindly let me know if any query has come up to you. Since there is no query from any of the parents, it makes me feel really very happy that yes, our parents are fully satisfied with our working and will always be cooperating with us to make their student wards and our students to reach the heights which we are expecting to and for which we are working day and night. Thank you so much, dear parents. Thank you to each one of you to be here and to listen to us so patiently. Thank you, respected ma'am, for sparing your valuable time so that the queries and whatever was going on in the minds of the parents, it has been sorted out. Thank you so much, dear teachers, to be here this evening. Thank you, ma'am. Uh, Thank you so much. Tejinder, this is why one it is it came to my mind to share with the Ji, parents that we would start the session. This is in time. That the books were that also would be this is in time this time. yes, ma'am. Yes. And start. This is if there would be anything, it is sometime it so happened due to the CBSE exam or something like that. So the blending learning it would be continued, right? Yes. Yes, So ma'am. learning means this is the offline and online classes also. Then maybe this is a dual offline classes also. We may have for the sometime it is at the online class where we would feel that it is needed, it is needed, so that we can do. Uh, Sometime the transportation issue, sometime it is a band also. It usually happens. तो मैंने कहा ना कि इन हालातों के साथ सिचुएशन के साथ रहना सीखना है उसके लिए हमें अपना काम बंद नहीं करना so Yes. we would be continuing that and that would be conveyed. और फंक्शन हमने एक जरूर बेचा इन बच्चों के लिए करवाओ बहुत देर हो गई है
बच्चे भी बहुत तंग आ गए हैं, हमने भी अपने बच्चों को परफॉर्म करते नहीं देखा, तो दैट माई सजेशन, इनकी बड़ी माँ मैं हूँ, तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है फ्रॉम फ्रॉम माई किड साइड, फ्रॉम पेरेंटल साइड, क्योंकि बड़ी पेरेंट मैं हूँ, तो एक इनका जैसे ही आफ्टर दैट इट इज, तो वो जरूर बिगनिंग में बिफोर वेकेशन प्लीज आपने जरूर करवाना, सो लेट देम हैव दैट चांस, राइट? जी Thank you, जी thank मैम, you श्योर। again to all parents. Thank you, dear. Thank you so much, ma'am. Thank you. Once again, I would like to thank each of the parents. Uh, Thank you, Akash sir, for hosting the meeting. I think we can Uh, wind up now. yes, ma'am. Thank you very much, Principal ma'am. Thank you very much, Jitendra ma'am. Thank you all, Thank parents. you. Thank you for being with us. Thank you all.